जुलाई 2021 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। पहला आर्टिकल है डोंट रिवेल आइडेंटिटी इन सेक्सुअल ऑफेंस केस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फिर आर कोविड-19 कर्व टेलिंग ऑन इम्यून सिस्टम। फिर थर्ड है लाइफ ऑन इंसेलिडस। फिर फोर्थ है प्रिपरेशंस ऑन फॉर रथ यात्रा। फिर इसके बाद फिफ्थ है सिक्किम ब्लॉसम स्टेट होम्स ऑफ 27% ऑफ इंडियन फ्लावरिंग प्लांट्स। सिक्स्थ है तो मेघालय रेज कंसर्न ओवर द असम काउ प्रोटेक्शन बिल। फिर सेवन्थ है व्हाट मेक द यूएपीए सो स्ट्रिंजेंट। फिर एट में प्रीलिम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, नाइन्थ में मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है अबाउट द डोंट रिवील द आइडेंटिटी इन द सेक्सुअल ऑफेंस केस सुप्रीम कोर्ट, तो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जिस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द वेलफेयर स्कीम फॉर वनरेबल सेक्शन ऑफ द populations by centers and the states and the mechanism law for protection and betterment of the vulnerable sections। तो क्या है कि मैटर क्या है कि आइडेंटिटी ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम्स इज punished when identity of the victim is sensationalized. Victim in India setup is looked down upon, affect not just the moralities, narrow the opportunity open for them. Victims is victimized against the public gaze. No reporting of a crime happens. Perpetrator is free. Pose the risk of repeating the crime with the same or different persons. Section 228A of IPC provision expressly forbids revealing the identity of the victim. Shortcoming doesn't define identity of a victim. The section doesn't apply to the court judgment. Attempt to prevent प्राइवेसी 1996 जो कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह केस में बोला गया था कि 2018 निपुण सक्सेना एंड अनूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and ORS case of Supreme Court forbade the revealing of the name of the victim. Now Supreme Court in the state of Karnataka versus Puttar Raja case has reiterated that the rape survivor name shouldn't be revealed and that they have to be referred as a victim. Section 23 of POSCO appealed for children to keep the identity secret. Indian Penal Code, official criminal codes in India. Origin if the IPC British was administratively expanding, encourage varieties of cultural raise conflict of laws, creation difficulties in the administration's appointment of the law members of the Council of Government Governor General's first law members is TV McCullough. ठीक है। Status of 1835 provide for the appointment of the law commissions. Law commission were appointed in 1834. फिर उसके बाद 1853 में भी हुआ लॉ कमीशन, फिर 61 में हुआ, फिर उसके बाद 1861 में हुआ, फिर उसके बाद 1879 में हुआ। द फर्स्ट लॉ कमीशन जो हुआ था वो तुम्हारा जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो है हेडेड बाय द टीवी मैकॉले के द्वारा हेड किया गया था। ठीक है। recommendation based on the first law commission formed the basis of the IPC Indian Penal Code, basis of the IPC Indian Penal Code।
ठीक है। फिर उसके बाद कोड केम इनटू फोर्स ऑन Jan 1st 1960, स्टिल इन फोर्स इन आवर कंट्री। IPC is its various sections define a specific crime and provides punishment for them. Criticism क्या होता है? Outdated and not in tune with the current reality, made to favor master subordinates system through which British governed India did not keep up with the needs of the societies. For these four law commissions, the first and the last work in India, but the second and the third had their sitting in England. ठीक है। No Indians were employed as a commissioners. Ground trade of the India is not reflected. ठीक है। तो इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है जेएस पेपर 2 में। इन इंडिया द क्रिमिनल jurisprudence is governed by the colonial era status. It stands out of synchronous of the current Indian context. Comment. Are COVID-19 curves, next article, are COVID-19 curves telling on immune systems? तो रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट बोल रहा है कि रिपोर्टेड कनेक्शंस बिटवीन द इम्यूनिटी डेप्थ एंड नॉन फार्मास्यूटिकल्स इंटरवेंशंस immunizations by natural infections illness need to be naturally immunized infection body develop antibody response to the infections response fidgets the infections and keep that particular pathogens in memories. Same persons infected by the same pathogen body will remember and recollect this pathogens. Same antibodies response is developed on time and there is a quick recovery. Women give the immunity developed to her children. मेडिकल एक्सपर्ट्स बोलता है कि इम्यूनाइजेशन बाय इन्फेक्शन से इज़ वेरी इफेक्टिव रेदर देन ट्रीटमेंट और व्हेन दे आर नो वैक्सीन available. Immunization are prevented pathogen with some days attacks in the future. Say, if a human being do not have the antibodies response, severe illness and even fatality होगा. ठीक है. Human being will not have the required immunities. फिर इसके बाद इम्यूनिटी डेप्थ क्या होता है कि इम्यूनिटी डेप्थ एट अ प्रेजेंट क्या नॉन फार्मास्यूटिकल्स इंटरवेंशन से होता है कॉजिंग इम्यूनिटी डेप्थ इन फॉर सम diseases respiratory illness will have seasonal connections. नॉन फार्मास्यूटिकल्स इंटरवेंशंस में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग use of masks and hand hygiene and other safety protocols are other than taking drugs employs to prevent the spread of COVID-19 virus prevented the spread of other pathogens respiratory synthetical virus well established influenza circulations patterns with peak incidence in the winter months. 2020 winters influenza virus circulations was almost non-existing. 99.9% reduction compared with the previous year. Due to a stringent lockdown and border control, substantial reduction in the contact between the individual, fall the number of RSV case in 2020 were unseasonal, untimely outbreak with a great severity than usual. Non-vaccine against respiratory illness caused by the respiratory
12 virus. All children RSV infection by their second birth in New Zealand. Unaffected mothers not be able to pass the protections to the baby. Then there will be no antibody response in the baby. Conclusion क्या है कि either be drop of non-forming intervention or there must be a new and substantial intervention that can minimize and prevent the seasonal and epidemic respiratory viral illness in the future. New and substantiable interventions are needed as there is a drop in immunizations by the natural infection. The next article about the Cassini spacecraft collect the data from the giant water plums erupting from the Enceladus. Study was published in the journal Nature's Astronomy. Cassini spacecraft missions to the Saturn's ambitious planetary explorations missions ever organized launch in the year 1997. Cooperations between the NASA and the European space agencies and the Italian space agencies unmanned spacecraft fourth space probes to visit the Saturn and the first to enter the Saturn orbit. Design includes the Saturn orbits and the lander for the Moon Titan. Lander named Huygens landed the Titans 2005. Objective क्या था कि to thoroughly study the Saturn systems, the study of the Saturn's its ring system and the magnetosphere, the icy moon and the Titans. Mission aimed to determine the compositions of the satellite surface and the geological history of each objects around the Saturn. Enceladus जो कि सैटर्न का मून है, स्मॉल आइसी बॉडी ऑब्जेक्ट है, ठीक है. Measure about 500 km in diameter and orbit Saturn's in a nearly circular path, जो कि surface of the moon Enceladus, ठीक है. Surface of the moon is almost pure water ice with trace amount of carbon dioxide, ammonia and light hydrocarbons. जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है. फिर अंडरगोज 5 डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी पीरियड, ठीक है. कैसनी जो है स्पेसक्राफ्ट और हाइजेंस जो कि लैंडर. कैसनी स्पेसक्राफ्ट कंफर्म दैट portions of the moons are geological active today. Moon experience extremely high heat flow associated eruptions of the water vapors and ice from the plumes and its south pole regions. Study published in the journal Nature's Astronomy analyzed data collected by Cassini that there might be microbial activities in the Enceladus में जो कि मून है सैटर्न का, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हो सकता है. ये केसन ये जो गया है, क्या नाम है इसका, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट बताया, ठीक है. तो इससे रिलेटेड एक प्रीलिम का क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैसिनी स्पेसक्राफ्ट.
पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ कोऑपरेशंस बिटवीन द नासा एंड द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये कोलैबोरेशन है नासा का, जापान का, इटली का, यूरोपियन यूनियन का, कनाडा का, बाकी सब का मिला के, ठीक है। फिर उसके बाद बोला द कैसन हिजन्स स्पेसक्राफ्ट इज एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट सेंट टू द प्लैनेट मार्स पर नहीं भेजा गया है, बल्कि सैटर्न के एक मून एनसेलेडस पर भेजा गया है, ठीक है। कैसन के मून एनसेलेडस पर भेजा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा कि प्रिपरेशन ऑफ रथ यात्रा को प्रिपेयर करने के लिए। तो श्री जगन्नाथ जी टेम्पल जो कि गुजरात में है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा वाला नहीं, ठीक है। ये सिचुएटेड इन अहमदाबाद गुजरात है। तो established in 460 years ago beside the river Sabarmati, main deities कौन है? होली ट्रिनिटी, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालदेव जी, गॉड सुभद्रा जी, idols installed in the temple by the साधु श्री सरंगदास जी। सदवरत ह्यूमन सर्विस जो कि मील्स एवरी डेज 2000 to 1200 needy poor persons including the saints irrespective of the caste, creed, religious distinctions। रथ यात्रा जो कि ऑल्सो रथ यात्रास chariot festivals public processions in a chariot carried deities, particularly annual Rath Yatra conducted in Odisha, Jharkhand, Gujarat, West Bengal and East India states, carrying the Holy Trinity and the Sudarsana Chakra। Sri Jagannath Ji Temple Rath Yatra, introduced in 1878, conducted on Asadhi Bej every year. Starts with Pahind Vidhi, clearing the way of a chariot using the golden broom, Pahind Vidhi, ठीक है। led by the 15 to 20 elephants and decorative dress plus group of trained athletes performing aerobatics and disciples with decorative flags on the temples. Finally comes the Holy Trinity on chariots pulled by the devotees। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो। तो ये क्वेश्चन है कि द रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ पहिंद विधि समटाइम्स इन इंडियन न्यूज। तो पहिंद विधि क्या होता है कि क्लियरिंग द वे ऑफ चैरियट्स यूजिंग द गोल्डन ब्रूम, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल अबाउट द सिक्किम ब्लॉसम जो कि स्टेट होम ऑफ 27% ऑफ द इंडियन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। 27% इंडिया का फ्लावरिंग प्लांट सिक्किम में ही पाया जाता है। इससे रिलेटेड प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पूछ सकता है। जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। geographical feature and their locations changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna, ठीक है। फिर जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो ये कंचनजंगा, ठीक है। ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व
One of the highest ecosystems in the world, reach elevation of 1220 meters above the sea levels, includes the range of echolines varieties from the subtropical to Arctic, as well as the natural forestry in the different biomes, with a rich diversity of a forest type and habitats. The 11th bioreserve for the India in the UNESCO Design World Heritage Site of the Biosphere Reserves. Okay. The Kanchenjunga Biosphere Reserve was included in the um, World Network of Biosphere Reserves in 2018 after deciding it by the Man and the Biosphere Program of UNESCO. The number of biosphere reserves in India, 18 biosphere reserves total. ठीक है. The number of international designated uh, World Network of Biosphere Reserves in India is 11 plus 7 domestic biosphere reserves. Geography of Kanchenjunga Biosphere Reserve, located in the state of Sikkim, border with Nepal and West and Tibet in the northwest. Economically activities, agriculture and horticulture, crops, animal husbandry, fishing, dairy and poultry farming. कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि कंचनजंगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व में है, ठीक है. फिर biggest import of the bird areas in the Sikkim occupies nearly 40% of the state's stretch eastward up to Sunghati in the north Sikkim. The Tista River flows south from the Toslo Namu cold desert form eastern boundary of the most part. Ratong Rangit Valley is south part of the area. ठीक है. Important for trekking activities, paradise, flora and lowland subtropical forest to alpine meadows and snow-capped peaks and glaciers. Has a world third highest and the India highest peak, Mount Kanchenjunga, that is 8,598 meters. Trans boundary and biodiversity hotspots conservation areas. फिर southern and central landscapes make up 86% of the cold desert situated in the greater Himalaya. Northern parts make up 14% in characterizing by trans-Himalayan features, ecologies, about 22 endemic and 22 rare and threatened plants. Uh, houses some of the nearly described plants, taxa for orchids, lamiaceae and Apiaceae family. About 30 species of rodents and other 42 confirmed mammals species belongs to the 16 families यहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है. तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स कैटेगरी में आता है. ठीक है. नेचुरल और मतलब कि क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल. ठीक है. फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि consider the following statement with reference to the Kanchenjunga Biosphere Reserve. It is the largest biosphere reserve from India to be included in UNESCO designated World Network of Biosphere Reserve. It is the latest biosphere reserves and India to be included in UNESCO designated World Network of Biosphere Reserve. हो सकता है. The major part of situated in Great Himalaya. हो सकता है. Core zone
Kanchenjunga National Park was designated as a World Heritage Site by the UNESCO under the natural category नहीं मिक्स कैटेगरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो ए हो जाएगा 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट मेघालय रेज कंसर्न्स ओवर द असम काउ प्रोटेक्शन बिल। तो असम कैटल प्रिवेंशन बिल 2021 envisages imposition of a complete ban on the transportation of cattle outside the states, aim to end illegal cattle smuggling along the Indo-Bangladesh borders in Assam. Once passed, it will amend the Assam Cattle Prevention Act 1950, regulates cattle slaughtering in the states. Assam Cattle Prevention Act 1950 slaughter of the cattle over 14 years of age or those unfit for work or breeding is allowed. Such cattle need to be given fit for slaughtered certificate by the local veterinary officers. आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि द स्टेट्स आर endeavors to organize agriculture and animal husbandry on a modern and scientific lines and take a step to improve the breeds and prohibit the slaughter of cow calves, calves and other milching and drowned cattle। ठीक है, फिर उसके बाद कैटल स्मगलर प्रिवेंशन लॉस इन इंडिया। More than 20 states have law restricting the slaughter of cattle and buffaloes to various degrees. Complete prohibition छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अलाउज विथ रिस्ट्रिक्शन तमिलनाडु में। 2010 में कर्नाटका पास लॉ टू रिप्लेस द 1964 एक्ट एंड कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटिंग ऑफ बुल्स एंड बुलॉक but didn't receive the governor assent नहीं मिला, led to the passage of the Karnataka Prevention for Slaughtering and Prevention of Cattle Ordinance 2021 जनवरी 5 2021। ठीक है, तो ये इशू क्या है कि दो द स्टेट्स stated intended to these legislations is these states is to be ensure the protection of cow and other bovines population and non-uniformity in the laws across the states creates a situation of illegal transparency into the states state where the slaughter is allowed. Accusations for the human rights groups and civil societies that laws are being misused। ठीक है, challenges in implementation since most farmers and cattle rearing find difficulty to maintain the cattle beyond the productive age। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट द स्टेट्स टू टेक स्टेप्स टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काउ। तो ये आर्टिकल 48 में होता लिखा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट द यूजिंग द मेक द यूएपीए so stringent। तो यूएपीए क्या होता है कि इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड द इशू अराइजिंग ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली डेथ ऑफ अ ट्राइबल एक्टिविस्ट सतन स्वामी during the jail terms raised a question about the liberties of many others। एल्गर परिषद केसेस जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के तहत हुआ था, जिसमें हिस्ट्री ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो कि इंडिया में विटनेस किया गया था, जो कि इंडिया विटनेस सेवरल सैंक्शनिस्ट
movement against India's sovereignty and integrity. Sanctionist tendency in India ever since the birth of the nations. 1950 to 1960, Nagaland and Mizoram witnessed a strong movement. साउथ में द ड्रेविडियन मूवमेंट आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्रीज. फिर उसके बाद मार्च 1967 में जो कि पेसेंट अपराइजिंग इन नक्सलबारी change of the state authorities. These incidents pushes the government, Indian states take effective measures to safeguard internal securities. Internal security precedents promulgated the unlawful activity ordinance, the provision of more effective prevention of the unlawful activities of the individual and the association. Later, the Unlawful Activities Act 1967 was passed in the Parliament. ठीक है. अब इस मिसयूज क्या कर लेता है कि बिना मतलब के वो जेल में डाल देता है. ठीक है. रिमांड ऑर्डर्स कैन बी ऑफ 30 days अरेस्ट कैन बी इम्पोज अप टू द 180 days, मतलब 6 month तक इम्पोज कर सकते हो विदाउट फाइलिंग द चार्जशीट बिना फाइल के. द कंक्लूजन क्या है कि आर्बिट्री यूज ऑफ दिस एक्ट कैन ओनली result in systematic abuse of majoritarian authority and disregards for the rule of the law. अब इससे रिलेटेड मेंस में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. तो यूएपीए इज क्रिटिसाइज्ड बाय द सिविल सोसाइटीज एज ऑथेटिकल एंथेटिकल्स टू constitution freedoms to the decent rule and the rule of decent and the rule of law and fair trials evaluates. फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाता है. तो वही नासा जो कैसिन स्पेस जो है वो उसमें नासा, इटली, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा का स्पेस एजेंसी, जेक्सा, ये सब मिलकर भेजा. ठीक है. कैसिन स्पेस क्राफ्ट को ये सैटर्न पर भेजा है और कैसिन है स्पेस क्राफ्ट भेजा अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट जो कि कैसिन है तुम्हारा ये यूजन है रोवर. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 और 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द पहिद विधि जो कि है क्लीनिंग ऑफ द वे ऑफ कैरियट यूजिंग द गोल्डन ब्रूम्स. फिर प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, ये कौन सा आर्टिकल में है? तो 48 में है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व से पूछ रहा है कि ये लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को डिजाइनेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. बिल्कुल सही है. A major part of is situated in Great Himalaya. बिल्कुल सही है. Core zone of the Kanchenjunga National Park is designed World Heritage Sites by UNESCO under the नेचर कैटेगरी नहीं है, मिक्स कैटेगरी है. करेक्ट पूछा तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला जीएस पेपर 2 के लिए है कि इन इंडिया क्रिमिनल jurisprudence C is governed by the colonial era status. It stand out of synchronize the current Indian context. Comment. फिर जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि UAPA is criticized by the civil society as authentical or constitutional freedom to decent rule and law, fair trials evaluates. ठीक है. Please like, subscribe and share the video. Thank you. Bye.